الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى ما بعد. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا واكثرنا واصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. Alhamdulillah, mon Abbas a fait le tafsir du Coran chaque samedi et sur les Nazi'at il est en train de parler à propos de sur les Nazi'at. Alhamdulillah, il va continuer. Je veux parler un peu du travail, comment le travail de tafsir au Coran a commencé en Inde. La chose la plus extraordinaire est que la famille de Shah Waliullah Muhaddith Dehelwi est considérée Muhaddith. Dans le nom, il y a Muhaddith. Shah Waliullah Muhaddith Dehelwi et ses 4 enfants. Shah Abdul Aziz Muhaddith Dehelwi, Shah Rafi'uddin Muhaddith Dehelwi, Shah Abdul Qadir Muhaddith Dehelwi et Shah Abdul Ghani Muhaddith Dehelwi. Mais le travail extraordinaire qu'ils ont fait pour le tafsir du Coran est énorme. Ça commence quand le nana de Shah Waliullah Muhaddith Dehelwi, c'est-à-dire le grand-père maternel de Shah Waliullah Muhaddith Dehelwi, Cheikh Wajihuddin, quand il est devenu âgé, il a décidé de distribuer tout son héritage, ce qu'il avait. Alors il a donné aux enfants, les fils, tous les matériels qu'il avait. Et à sa fille, qui était une petite fille, Cheikh Wajihuddin a décidé de donner tous les kitabs qu'il avait, spécialement les tahrirat, c'est-à-dire les écrits qu'il avait reçus de ses mashayikh. Alors la femme de Cheikh Wajihuddin lui a dit कि अभी तो इस बच्ची की शादी भी नहीं हुई है, उसको कुछ माल देते जो जहेज में काम आता, ये किया कि आपने ये तमाम किताबें और ये जो है तहरीरात दे दी. Cette fille, elle n'est même pas mariée et serait plus bien que vous lui donnez des choses de l'argent afin que ça lui serve quand elle se marie. Et pourquoi vous lui avez donné toutes ces choses-là? Alors Cheikh Wajihuddin a répondu que तुझे क्या पता इसकी नस्ल में एक ऐसा आलिम पैदा होगा जो पूरे आलम को रोशन करेगा. Je dis पूरे आलम को, je ne dis pas पूरे हिंदुस्तान को. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses dans sa génération, un alim va être créé et il va répandre le din dans le monde entier. Et je dis le monde entier parce que quand il était parti une fois pour Hajj, et nos ulama de l'Inde essayent de trouver des mashayikh de Yémen afin que le sanad ça devient, il y a moins de maillons jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple,
Cheikh Nakhibi était en Jeddah, Ahmed al-Nakhibi, et je suis parti près de lui afin de raccourcir les maillons jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison est que généralement il y a 23 maillons jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ulama Hind, mais ulama Yemen 17, il y a 6 maillons qui sont coupés. La raison est que le mashayikh de l'Inde, leur âge est généralement 75 ans, entre 65 et 75 ans. Et l'âge des mashayikh de Yémen est 105, 110 ans. Alors, en 3 mashayikh des Indes, 2 cheikhs de Yémen viennent. C'est pour cela que Hazrat Nanutwi Nawrullah Marqadahu, quand il était parti au Hajj, il est arrivé à Aden. À ce moment-là, on voyageait par navire. Alors il a demandé est-ce qu'il y a un cheikh qui a un hôte au Silsila. Alors les gens lui ont montré un cheikh de Yémen. Alors il est parti près de lui. Et le mashayikh de hadith ne donne pas ijazat tant qu'ils ne connaissent pas de qui vous avez appris hadith. Alors le cheikh lui a demandé min aina ta'allamtum ma'a man ta'allamtum, avec qui vous avez appris le hadith. Alors Hazrat Nanutwi a répondu min cheikh Abdul Ghani. Abdul Ghani Muhaddis Dehelwi. Il y a 2 Abdul Ghani. Un est l'élève de Shah Mohammed Ishaq. Shah Mohammed Ishaq est le grand pour Nawasa. Le petit-fils est le petit-fils de Shah Abdulaziz, qui est le fils de Shah Waliullah. Et alors, Shah Abdul Ghani, le deuxième Shah Abdul Ghani, est l'élève de Shah Mohammed Ishaq. Et le premier Shah Abdul Ghani est le fils de Shah Waliullah. Alors, j'ai appris hadith près de Shah Abdul Ghani, Muhaddis Dehelwi. La arifu, je ne le connais pas. Ma'aman ta'allama huwa. Il a appris hadith près de qui? Alors, Hazrat Nanutwi, Manana Qasim Nanutwi a répondu que ta'allama مع Shah Mohammed Ishaq. La arifu. Il a appris hadith près de Shah Mohammed Ishaq. Alors le cheikh a répondu que je ne le connais pas. مع من تعلم مع جده الفاسد الشاه عبد العزيز. Il a appris hadith près de son grand-père maternel, Shah Abdul Aziz. La arifu. Man ta'allama huwa, il a appris, et je ne le connais pas, il a appris hadith près de qui? Alors, il a répondu, ta'allama ma'a Cheikh Waliullah Muhaddis Dehelwi. نعم تعلم مع الشيخ محدث دهلوي الشاه ولي الله محدث دهلوي الشيخ محدث دهلوي شجر الطوبة من دخل تحت هذه الشجرة دخل الجنة. Alors le cheikh a répondu que Shah Abdul Aziz, il a appris hadith près de qui? Alors Hazrat Nanutwi a répondu que Shah Abdul Aziz a appris hadith près de son père Shah Waliullah. Alors le cheikh a dit que Shah Waliullah est Shajar al-Tuba. Shajar al-Tuba est un arbre de Jannah, et qui entre sous cet arbre va entrer dans Jannah. C'est pour cela que हमारे उलमा जो हैं ये सब माशाअल्लाह हमारे उलमा मौजूद हैं, इन्होंने इनका सिलसिला वहाँ से लगा हुआ है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि शाह वलीउल्लाह की रस्सी को पकड़ के और उनके दामन को पकड़ के सीधे जन्नत में चले जाएंगे. Ces उलमा qui ont pris hadith près de ces mashayikh, et ces mashayikh, c'est ça le silsila. Inch'Allah,
on va prendre le daman, le pan de Shaulillah Muhaddis de Helwi et entrer dans Jannah. Alors je disais que Shaulillah Muhaddis, la grand-mère de le grand-père de Shaulillah Muhaddis de Helwi a donné toutes ces tahrirat, tout ce qu'il avait en écrit à sa fille, et Shaulillah est né de ça. Shaulillah Muhaddis de Helwi, quel est son travail? Alors le travail de Shaulillah était tellement répandu que quand on pense à son travail, on est vraiment abasourdi. Mahir al-Qadiri a écrit un poème à propos de Shaulillah. Il a dit « Tu muhaddis bi, mufassir bi, faqih sheikh bi » Tu es un muhaddis, tu es un mufassir, tu es un faqih, tu es un sheikh. इसलिए अपनी औलाद के लिए दुआ मांगे कि मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने, फकीह और शेख बने. डॉक्टरी है, जो है इंजीनियरी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो है कुछ नहीं इसके सामने. तो मुहद्दिस भी, मुफस्सिर भी, फकीह और शेख भी, कौन अंदाजा लगाए तेरे महसूसात का. Tu es un muhaddis, tu es un faqih, tu es un mufassir, tu es un sheikh. Quand अंदाजा लगाए तेरे महसूसात का, on ne comprend pas jusqu'à कितनी गहराई तक तुम्हारा ilm है. On ne comprend pas quelle profondeur vous avez pour votre ilm. Alors Shaulillah Muhaddis de Helwi, quand il a commencé son travail à Madrasa Rahimiyya, il a nommé sa madrasa au nom de son père, Shah Abdul Rahim. Et Shah Abdul Rahim, Shaulillah, beaucoup de fois, l'enfant est plus renommé que son père, mais le statut de son père est plus grand que l'enfant. Alors Shaulillah disait que même मेरे वालिद के मकाम के सामने कुछ नहीं. इसलिए कि शाह अब्दुल रहीम, क्या बयान करें इधर उधर की बातें. शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, quand il est devenu alim, il voulait devenir bête. Alors il fréquentait l'enfant de Khaja Baqi Billah rahmatullah alayh. Khaja Baqi Billah, son nom était Khaja Khurd. Khaja Baqi Billah est le cheikh de Mujaddid al-Fessani. Le cheikh de Mujaddid al-Fessani. Alors il est fréquenté Khaja Khurd et il a demandé à Khaja Khurd que आपके हाथ पर मैं बैत होना चाहता हूँ, je veux devenir bête près de vous. Alors Khaja Khurd lui a répondu non, ne deviens pas bête près de moi, tu deviens bête avec un des khalifas de Sayyid Adam bin Nouri. C'est-à-dire que Khaja Khurd, ici c'est Khaja Baqi Billah, Mujaddid al-Fessani, Sayyid Adam bin Nouri, et après Sayyid Adam bin Nouri, un des khalifas de Sayyid Adam bin Nouri, Khaja Khurd a refusé, c'est-à-dire qu'il considérait les khulafas de Mujaddid al-Fessani d'avoir un très grand maqam, très grand niveau. Alors, regarde à Delhi qui est ici des khulafas de Sayyid Adam bin Nouri rahmatullah alayh. Sayyid Adam bin Nouri était un très grand cheikh. Mujaddid al-Fessani, son travail s'est répandu de deux façons. D'un côté, son fils Khaja Mohammed Masoum, et d'un autre côté, Sayyid Adam bin Nouri rahmatullah alayh. Alors, il a regardé à Delhi. Il y avait un cheikh qui n'était pas connu du tout. Personne ne le connaissait. Hafiz Abdullah Dehlawi. Hafiz Abdullah Dehlawi, personne ne le connaissait. Alors, il a regardé, après il a trouvé ce cheikh. Alors, il est parti près de Khaja Khurd, le fils de Khaja Baqi Billah. Il y a un cheikh ici, mais personne ne le connaît. Alors, c'est qui ça, Hafiz Abdullah Dehlawi?
Alors, pas auprès de lui, il devient mouride près de lui. Alors, le père de Shah Waliullah Muhaddis Dehlawi est parti près de Hafiz Abdullah Dehlawi et il est devenu bête avec lui. Quand il est resté beaucoup de temps avec Hafiz Abdullah Dehlawi, alors Hafiz Abdullah Dehlawi lui a donné khilafat et lui a dit que Abdurrahim, तुम छोटे थे और तुम खेल रहे थे कहीं अपने साथियों के साथ, तो मेरा गुजर वहाँ हुआ तो मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर विलायत के असरात हैं और तुम वली कामिल बनने वाले हैं। तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह इस शख्स को, इस बच्चे को वली कामिल बना और उसके कमाल में मेरा हिस्सा डाल दे। Alors, j'ai fait doigt, tu étais un petit enfant, et j'ai fait doigt à Allah, je t'ai vu jouer avec des enfants, d'autres enfants, alors j'ai reconnu dans toi des asarat, des signes que ce petit enfant va devenir un grand alim. Alors, j'ai fait doigt auprès d'Allah que tu deviens un grand cheikh et tu deviens un grand cheikh près de moi. Alors, c'est pour cela qu'Allah a accepté mon doigt. Allah Ta'ala ne unki doigt qaboul ki. Puis to Shah Abdul Rahim, bare maqam par pਹੁੰਚੇ. Shah Abdul Rahim était une des personnes qui a écrit Fatawa Hindiya, Fatawa Alimgiriya, qui était un des grands kitabs de Fatawa qui avait été arrangé par Alimgir rahmatullah alayh. Alors après Shah Abdul Rahim, Shah Waliullah est né. Et Shah Waliullah, le travail qu'il a commencé premièrement, et le travail de hadith, il a introduit les six kitabs de hadith dans l'Inde. Mais le tafsir, il a traduit le Coran en farsi. Alors, Muhaddis Shah Waliullah, Muhaddis Dehlawi, la première traduction dans la langue dans la langue perse, et par Shah Waliullah Muhaddis Dehlawi. Ses fils, Shah Abdul Aziz a écrit un tafsir, a commencé à écrire un tafsir, et un tafsir Azizi. علما نور شاہ کشمیر نور اللہ مرقدہ آخری اگر یہ کتاب مکمل ہوتی تفسیر کی تو تمام تفاسیر سے بے نیاز کر دیتی. Si ce tafsir, de ce kitab de tafsir aurait été conclu, alors on n'aura pas besoin d'un autre tafsir. Il y a seulement 2 ou 3 paras qui ont été complétés. Et si vous regardez le tafsir, il y a tellement de ulum, et beaucoup de ulum sont la donnée, Shah Abdul Aziz, Nawrullah Marqadahu. Et Shah Abdul Aziz की क्या बात करें, हम लोग तो उलमा हैं लेकिन कमज़ोर हैं, हमसे तकालीफ बर्दाश्त नहीं होती. शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने शियों के मुताल्लिक़ किताब लिखी थी, तो उनको कामिलियन का जो का मजमुआ बना के उसको पीस के जहर दिया गया था, जिसकी वजह से पूरे बदन में खारिश थी. शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, quand il a écrit un kitab à propos des Shia, Tuhfa Isna Ashariya, alors il y avait beaucoup de Shia, spécialement dans la famille royale. Il y a beaucoup de femmes qui sont, parce que c'était des Moghals, c'était des Turcs, et ils avaient connexion avec l'Iran, et beaucoup de femmes étaient venues qui étaient Shia. Alors on lui a donné un poison à cause de lequel il avait beaucoup de démangeaisons dans son corps. Après, mais il a continué le travail de din. Après, quand il a continué le travail de din, alors le roi lui a forcé de marcher de Delhi à Lahore. Delhi से लाहौर तक चलाया,
तो गर्मी पॉइजन की गर्मी की वजह से नाबीना हो गए थे. Il était devenu aveugle à cause de ce poison. Mais il a continué le travail de Din. Alors, afin qu'ils ne peuvent pas écrire, on avait retiré sa main d'ici. Comme ça, ses deux mains étaient paralysées chez Abdulaziz. Mais même à cause de à cause de toutes ces difficultés, Cheikh Abdulaziz a continué le travail de Din. C'est pour cela que quand Cheikh Abdulaziz enseignait, il marchait toujours comme ça. Il ne s'asseyait pas. Cheikh Abdulaziz, तालीम देते वक्त आखिरी जिंदगी में नाबीना थे, जो है पूरे बदन में खारिश थी और जो है हाथ निकल गए थे, फिर भी जो है चलते फिरते जो है वो दीन का काम करते थे और पढ़ाते थे. इस तरह हमारे बुजुर्गों ने क्या मौलाना उनकी जिंदगियां थी और वो क्या कैसे थे, और हम लोग तो वैसे ही निकम्मे हैं, तो क्या उनकी जिंदगियां थी. शाह अब्दुल अजीज, c'est ça son travail du Coran. Shah Abdul Qadir, Muhaddis Dehelwi, a écrit Shah Rafi al-Din, le deuxième, Shah Abdul Aziz, Shah Rafi al-Din, Shah Abdul Qadir et Shah Abdul Ghani. Et la chose la plus ajib est que les quatre frères sont très grands. Et ils ont une similarité avec les quatre enfants de Shah Mujaddid al-Faisani. Les quatre enfants de Mujaddid al-Faisani ont fait un grand travail. De la même façon, les quatre fils de Shah Waliullah ont fait un grand travail. Alors le deuxième, Shah Rafi al-Din, le deuxième fils, et les quatre enfants, les quatre fils, le plus jeunes sont décédés le premier. Shah Abdul Ghani, après Shah Abdul Qadir, après Shah Rafi al-Din, après Shah Abdul Aziz. Et c'est pour cela que Shah Abdul Aziz disait que tamam hamare chote bhai chale gaye aur hum jo hai zinda rahe. Alors Shah Rafi al-Din a écrit une traduction du Coran en ourdou mot par mot, Shah Rafi al-Din. Et on le trouve ici. On le trouve maintenant, même maintenant on le trouve. Le troisième enfant de Shah Waliullah, le troisième fils de Shah Waliullah, Shah Abdul Qadir, a écrit un tarjama du Coran, et quand il a fini ce tarjama, il a vu dans un rêve que le Coran un par nazil ho raha hai. Le Coran est révélé à lui. Alors le matin, il est parti près de son grand frère. Martabe के एतबार से जो है सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, le statut de Shah Abdul Aziz était le plus grand. Il est parti près de Shah Abdul Aziz, il lui a dit que Hazrat बहुत अजीब ख्वाब आया, भाईजान बहुत अजीब ख्वाब आया. Mon frère, j'ai vu un rêve qui était vraiment très incroyable, qui était incroyable. Alors Shah Abdul Aziz lui a demandé Kya khab dekha, qu'est-ce que tu as vu? Alors il a dit son rêve. Alors Shah Abdul Aziz lui a dit इसका मतलब यह है कि अगर कुरान उर्दू जबान में उतरता तो आपकी जबान में उतरता. C'est-à-dire que si le Coran aurait été révélé dans la langue ourdou, il aurait été révélé dans votre langue. Et c'est ce tarjama du Coran, Hazrat Cheikh al-Hind Nawrullah Marqadahu l'a modernisé dans la langue ourdou. Et c'est ce tarjama du Coran, si vous regardez Ma'rif al-Quran de Mufti Shafi Sahab, le tarjama sous les ayats et le tarjama de Cheikh al-Hind, le tarjama de Cheikh al-Hind, la base est Mawdih al-Quran, le tarjama de Shah Abdul Qadir. Mais si vous regardez le tafsir et Ma'rif al-Quran de Maulana Idris Kandilwi, alors sous les ayats,
Mawdih al-Qur'an est utilisé. Mawdih al-Qur'an, la traduction de Shah Abdul Qadir. Moi-même, je préfère la traduction de Shah Abdul Qadir, Nawarallahu marqadahu. C'est une traduction tellement parfaite que ilham tarjama. C'est un tarjama qui est descendu près de Dieu, près de Allah. बहुत उम्दा तर्जमा है शाह अब्दुल कादिर का. Et le quatrième fils, le premier fils, Shah Abdul Aziz, tafsir Azizi. Deuxième fils, Shah Rafi'uddin, tafsir tarjama mot par mot. Troisième fils, Shah Abdul Qadir, une traduction ouverte. Et le quatrième fils, Shah Abdul Ghani, est passé très, très tôt dans sa vie, mais il a laissé un fils qui était Shah Ismail Shahid. Et Shah Ismail Shahid a écrit Taqwiyatul Iman, qui était un kitab à propos de Aqaïd et à propos de Bid'at. Et même les Arabes reconnaissent cette kitab. Ce kitab a été imprimé par l'Arabie Saoudite juste récemment et distribué partout. Shah Abdul Aziz, à propos de Shah Ismail Shahid, les ulama disent que son kitab Taqwiyatul Iman était tellement répandu dans l'Inde que जैसे फजाइल आमाल हर जगह भरी जाती है, इसी तरह तक़वियतुल ईमान हर जगह भरी जाती थी. Taqwiyatul Iman, les gens lisaient partout, les ulama lisaient partout, et c'est pour cela que nous, le Bid'at, sont sortis de toute l'Inde à cause de Shah Ismail Shahid. C'est pour cela que le travail énorme que Shah Waliullah a fait, c'est impensable quand je lis le travail de Shah Waliullah, Muhaddis de lui. Ça, c'est le travail seulement de Coran. Et Shah Waliullah a introduit aux Indes Dars Coran. जो आप करते हैं Dars Coran, c'est Shah Waliullah qui a introduit partout par ses élèves, Shah Waliullah Muhaddis de lui. Et c'est pour cela que et le travail de Shah Waliullah a été répandu par son fils, Shah Abdul Aziz Muhaddis de lui. Et si vous regardez le travail de Shah Waliullah, on peut le classifier en beaucoup de choses. Isha'at al-Qur'an. Premier, Isha'at al-Qur'an. Répension du Qur'an. Deuxième, Isha'at al-Hadith. Troisième, Radd al-Shiyat ou Radd al-Bid'at. Quatrième, Afrad ka tayyar karna. Afrad ka tayyar karna, c'est-à-dire préparer la relève, qui est très important dans chaque travail de din, préparer la relève. Et Hazrat Shah Waliullah Muhaddis de lui a préparé sa relève après avoir créé beaucoup de personnes qui étaient capables de prendre la relève. C'est pour cela que Shah Abdul Aziz disait que Alhamdulillahi alladhi وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. Ibrahim alayhi salam disait que tamam ta'rif Allah के लिए है, जिन्होंने मुझे बड़ी उम्र में इब्राहिम और इसहाक नसीब फरमाया. Alors Ismaïl ou Ishaq नसीब फरमाया. C'est Shah Abdul Aziz disait que tous les tarifs, tous les louanges sont pour Allah qui m'ont donné à mon grand âge Ismaïl, c'est-à-dire Shah Ismail Shahid, Nawarallah Marqadahu, qui est devenu Shahid dans Balakot, et Shah Mohammed Ishaq, qui était introduit par son grand-père Shah Abdul Aziz pour enseigner dans Madrasa Rahimiyya. Alors il a divisé son travail, Shah Abdul Aziz a divisé son travail entre Tasawuf et Hadith. Tasawuf, il a donné
à Sayyid Ahmed Shahid, qui était son khalifa, et Sayyid Ahmed Shahid avait pour bras droit de grands ulama, Shah Ismail Shahid, le neveu de Shah Abdul Aziz, Maulana Abdul Hayy Pulti, qui était, pour les deux, Shah Abdul Aziz disait que c'est Raïs al-Mufassirin, Raïs al-Muhaddissin, इनको यूं कहते थे. और सैयद अहमद शहीद avec pour khalifa Shah Abdul Rahim Wilayati aussi, qui était le cheikh de Miaji Nour Mohamed Jinjanoui, et Miaji Nour Mohamed Jinjanoui est le cheikh de Hadi Imdadullah rahmatullah alayh, de qui tout le silsila Fès de Khandan et Waliullahi s'est répandu. Mais c'est pour cela qu'on doit reconnaître le travail de ces mashayikh. Le travail était énorme, et on bénéficie de jusqu'à maintenant. इन तमाम बुजुर्गान दीन से हम बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हैं. इसलिए जब भी मैं जो है इसाले सवाब करता हूँ तो खुसूसन शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अजीज पर बहुत ही ज्यादा इसाले सवाब करता हूँ कि उनकी वजह से पूरे उलमा की जमात को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, और खुसूसन और फिर पूरे आलम को फायदा हुआ. C'est pour cela que beaucoup de fois quand je fais Saleh Sawab, je fais Saleh Sawab pour Shah Abdul Aziz et Shah Waliullah, à cause d'eux, on a bénéficié beaucoup, et alhamdulillah, Allah Ta'ala nous donne tawfiq de suivre dans ces voies-là. थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन दीन की खिदमत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए कि औलाद में तू मुफस्सिर भी, मुहद्दिस भी, फकीह हो, शेख भी. औलाद में मुहद्दिस कोई हो, मुफस्सिर कोई हो, फकीह हो, शेख हो, वो इससे बेहतर है कि कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो. हज़रत मुर्शिद आलम यह कहा करते थे कि खिटपिट क्या चीज़ होती है, असल चीज़ तो जो है दीन के काम में मशगूल होना है. Sayyid Ahmed Shahid Nawrallah Marqadahu ne savait pas lire. Sayyid Ahmed Shahid, le khalifa de Shah Abdul Aziz, il avait reçu ilm comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, वजह से तरीक़े मुहम्मदिया Sayyid Ahmed Shahid ने राइज किया था. C'est pour cela que Sayyid Ahmed Shahid a introduit le tariqa Muhammadiyya, et c'est pour cela qu'un grand cheikh comme Shah Abdul Rahim Wilayati est devenu murid de Sayyid Ahmed Shahid. और Sayyid Ahmed Shahid के मकाम का, जो शाह अब्दुल अजीज के खलीफा थे, के मकाम का अंदाज़ा कौन लगा सकता है जिसने पूरी हिंदुस्तान की हालत को पलट दी. Le maqam de Sayyid Ahmed Shahid, le khalifa de Shah Abdul Aziz, on ne peut pas le reconnaître. एक मर्तबा हजरत गंगोही नवरल्लाह मरकदू, une fois हजरत गंगोही est parti dans une mosquée d'un des villages de Uttar Pradesh, et il a vu une personne âgée. Alors Hazrat Gangohi a dit à ses élèves, et les élèves, le khalifa de Hazrat Gangohi, c'était Hazrat Shaykh Hulain Maulana Mahmoud al-Hassan Gangohi et Hazrat Maulana Shah Abdul Rahim Raipuri et Hazrat Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. उनको कहा कि ये आदमी जो वज़ू कर रहे हैं उनको नमाज के बाद मेरे पास ले आओ. Amenez cette personne qui est en train de faire wudu, emmenez-les près de moi. Alors, après namaz, cette personne âgée est venue près de Hazrat Gangohi. Hazrat Gangohi lui a demandé que आपके अंदर कुछ मैं असरात देखता हूँ, तो वो क्या बात है, तो क्या करते हो आप? Je vois quelques signes qui sont ajib, qui sont extraordinaires chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous faites? Alors il a dit, je lis le Coran
कुरान के असरात मुझे मालूम है. Je sais, je lis le Coran, je sais les signes du Coran. Je fais les tahajjud, je sais les signes du tahajjud. Je fais cela. Il a énuméré toutes les actions qu'il faisait. Alors, Hazrat Gangohi Nawarallah Marqadahu lui a répondu, tous ces signes, je le sais. Il a dit, à la fin, il a dit, je me rappelle que j'étais un petit enfant et le groupe de Sayyid Ahmed Shahid était arrivé dans notre village et tous les ulama étaient assis assemblés près de Sayyid Ahmed Shahid et autour de Sayyid Ahmed Shahid, et moi j'étais en train de jouer avec les autres enfants, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Alors je suis soudainement je suis entré entre les ulama, je suis venu près de Sayyid Ahmed Shahid et Sayyid Ahmed Shahid, उनकी निगाह मुझ पर पड़ी, il m'a regardé seulement. Alors Hazrat Gangohi a répondu कि यही वो बात है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे सर से आसमान तक एक नूर है, एक नजर से ये चीज पैदा हुई. यानी c'est ça même que je voudrais trouver, que j'ai vu qu'il y a un nour qui monte de votre tête jusqu'au ciel. Et ça, c'était Sayyid Ahmed Shahid. Un de mourides de Sayyid Ahmed Shahid était de Saharanpur, Hakim Saab. Et c'est Hakim. Alors, il a insisté que Sayyid Ahmed Shahid vienne à Saharanpur. Et quand Sayyid Ahmed Shahid est venu à Saharanpur, alors Hakim Saab a convoqué tous les élèves, tous les enfants de sa famille qui étaient en train de jouer. Il lui a dit que Sayyid Ahmed आप उनके सर पर हाथ फिरा दें. Alors Sayyid Ahmed Shahid a mis la main sur la tête de ses enfants. Tous les enfants qui sont venus, उनकी नस्ल में उलमा, मशाइख और हकीमी खानदान, हजरत मौलाना जो है आकिल साहब जो शेख उल हदीस हैं, हजरत मौलाना सलमान साहब जो उस्ताद हदीस और हजरत शेख के दामाद थे, हजरत ये सब पूरा हकीमी खानदान, और जो हजरत मौलाना इलियास साहब, ये सब जो है उनकी नस्लों में. और जो बच्चे नहीं आ सके थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ गए, इसलिए कि कांधला में जो है सर सैयद कांधला में पढ़े थे, और मैं कांधला गया था तो वहाँ मैंने कहाँ वो पढ़े थे, उनकी दोस्ती कांधला की खानदान के साथ बहुत थी. इस वजह से यह हजरत शेख की खानदान में डिवीजन था जो है. कुछ बहुत से लोग अलीगढ़ गए थे और बड़े बड़े जज और बहुत बड़े दुनियावी तालीम याफ्ता बने थे, जिनके आबा व अजदाद के सर पर सैयद अहमद शहीद का हाथ नहीं फेरा था, और जिनके सर पर सैयद अहमद शहीद का हाथ फेरा था उनकी नस्लों ने पूरे आलम को फैज पहुंचाया. तो ये कितने बड़े ये आदमी थे कि जिनका मकाम इतना कि एक हाथ फेरने की वजह से नस्लों में कितना तारीख बदल जाती. Alors je disais que Sayyid Ahmed Shahid était venu à Saharanpur et Hakim Saab, qui était son mouride, a convoqué tous les enfants qui étaient en train de jouer. Alors Sayyid Ahmed Shahid a mis sa main sur la tête des enfants qui ont eu la chance de venir, et de tous les mashayikh de Hakimi Khandan, c'est-à-dire la famille de Hazrat Maulana Zakaria Nawarallah Marqadahu, tous sont descendants de ces enfants. Sur la tête de Hazrat Sayyid Ahmed Shahid avait mis sa main. Alors इनकी जिंदगियों में कितनी बरकत थी, उनके निगाहों में कितनी बरकत थी, उनके चलने में कितनी बरकत थी. Le groupe de Sayyid Ahmed Shahid, s'il est passé entre deux villages et
il y avait un village. Un village est plus près de Dieu que l'autre. L'autre village n'est pas très dindar. Mais si le groupe de Sayyid Ahmed Shahid est passé dans ce village-là, वहाँ दीनदारी बढ़ गई और वहाँ जो है दीनदारी ज्यादा हो गई. तो कितने कमालात थे जो शाह वलीउल्लाह के असल कमालात थे जो शाह अब्दुल अजीज के जरिए से सैयद अहमद शहीद को मिले थे. ये जो है तफसीर कुरान के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर दी. अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए. हमारे बुजुर्गान दीन के हालात तो इतने वसी हैं, घंटों तक बयान मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है ये मजलिस मुख्तसर होती है. तो अल्लाह ताला उनके फयूदात से हमें मुस्तफीज़ होने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला nous donne le tawfiq d'apprécier nos mashayikh qui ont fait tellement de travail que quand je lis le travail qu'ils ont fait, un travail énorme, avec beaucoup de difficultés, parce que ces mashayikh et leurs enfants, c'était déjà l'entrée de l'Empire britannique dans ces pays-là. Et à cause de cela, ils ont eu beaucoup de difficultés, mais ils ont continué le travail de Dîn. Et à cause de cela, nous sommes ici à la réunion des musulmans qui essayent de suivre ce qu'ils ont montré pour nous. Alors, Inch'Allah, il faut faire droit pour ces mashayikh et leurs élèves et les élèves de leurs élèves. À cause de nous sommes musulmans et nous voyons toutes ces dari, barbes et amama ici à La Réunion et en Europe. Et tarikh, mais jab tarikh ka mutala karta hun, quand je lis l'histoire, beaucoup de défaites les 200 dernières années. Avant cela, jusqu'à Khilafat Othmaniya, jusque cela, si une fois j'avais quand la défaite de l'Irak, alors il y avait Shab Barat, alors mon père a dit de faire un bayan, alors pour montrer au musalli de l'islam l'histoire de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à 1924. J'ai essayé de montrer toutes les combien d'années chaque empire musulman resté. L'islam est तारीख बहुत अजीब है और बहुत शानदार है, लेकिन हमें उसका इल्म ज़्यादा नहीं. तो जो है आखिरी 200 साल में बहुत हज़ीमतें हुई, लेकिन ये याद रखो कि इस्लाम को जब भी दबाया जाता है तो वो उभरता है, और अफराद जब भी इस्लाम में जो है बहुत ज़्यादा दबाया गया, बहुत ज़्यादा तकालीफ आई, तो अफराद कमाल के बहुत ज़्यादा पैदा हुए. ये जो है अजीब चीज़ है. C'est-à-dire que quand l'islam a été vraiment très appuyé et on a essayé de détruire l'islam, beaucoup de personnes de qualité Allah a créé, qui ont répandu l'islam partout dans le monde et personne ne le savait. Hazrat Maulana Ilyas Sahab Rahmatullah alayhi disait que हमारा ये दीन का काम जो है चलता रहेगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा. Notre travail de dîn va se répandre et personne ne le saura. C'est pour cela que beaucoup de fois des gens me demandent est-ce que vous êtes à Facebook, à Twitter et tout ça. Je préfère rester anonyme et très discret afin que le travail de dîn continue.
बस ये बातें कुछ अर्ज करनी थी। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। Allah Ta'ala, nous faisons doigt qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de suivre la voie qui a été créée par ces mashayikh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, हमारे बुजुर्गान दीन की खिदमतों को या अल्लाह हमें उनकी खिदमतों को या अल्लाह उनकी खिदमत को जानने की तौफीक अता फरमा और उनके नक्श कदम पर या अल्लाह बग़ैर तकलीफ़ के उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमसे तकालीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, हम कमज़ोर हैं, लेकिन या अल्लाह इस कमज़ोरी के बावजूद तो हमें तेरे दीन के काम के लिए कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या